नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूनी भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गाचो प्रतिबंध सुदारणा विधेयक 2026 मंजुरी दिल्या. हे विधेयक ब्रेस्तारा संसदेत मंजूर केल्लें. कठोर ख्यास्तीची तरतूद आनी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करून भौशीक परीक्षांमदल्या गैरप्रकारांक आळा घालप हो ह्या कायद्याचो उद्देश आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांचो फुडार सुरक्षीत राखत एक भक्कम कायदेशीर चौकट निर्माण करून परीक्षा प्रणाली मदली पारदर्शकता आनी सचोटी अदीक बळकट करप हेच हाचे उद्देश आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आंध्र प्रदेशांत विजयनगरम जिल्ल्यांतल्या भोगपुरम हांगा ग्रीनफिल्ड अल्लुरी सीताराम राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केलें. विमानतळाचेर आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल एस अब्दुल नझीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आनी हेर मानेस्तांनी प्रधानमंत्र्यांचें स्वागत केलें. मोदींनी प्रवासी टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण केलें आनी ह्या ग्रीनफिल्ड विमानतळाची पळोवणी केली. तांणी विमानतळावेल्या प्रवाशां खातीर अत्याधुनीक सुविधांचो आढावो घेतलो. तशेंच विमानतळाची रचना, प्रगत तंत्रज्ञान, मास्टर प्लॅन आनी विमान येरादारी केंद्र म्हणून जावपी फुडारांतलो विस्तार ह्या बाबत अधिकाऱ्यांकडच्यान म्हायती घेतली. नव्या विमानतळाचें म्हत्व अधोरेखीत करतना प्रधानमंत्र्यान म्हळें की स्वातंत्र्य झुजारी अल्लुरी सीताराम राजूच्या नांवान तयार केल्लो हो विमानतळ आदिवासी समाजाच्या हक्का खातीर झुजतना आपल्या प्राणांचें बलिदान दिलें त्याच जमनीचेर उक्तावण करप ही अत्यंत अभिमानाची गजाल. आंध्र प्रदेश खासा करून उत्तर आंध्राच्या प्रगती आनी उदरगती खातीर हो विमानतळ म्हत्वाचो आधार जातलो आनी राज्यांतल्या तरणाट्यांक उज्वल फुडार आनी चड संदी तयार करपा खातीर लॉन्च पॅड म्हणून काम करतलो अशें तांणी सांगलें. समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश आनी देशाच्या उदरगतीत देशांतल्या तरणाट्यांची प्रतिभा आनी तांक हाची चड म्हत्वाची भुमिका आसपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. हे मतींत घेवन सरकाराचें लक्ष सेमी कंडक्टर सारक्या तंत्रगिन्यानाच्या उद्देग उबारपाचेर आसा अशें तांणी सांगलें. विशाखापट्टणमांत नव्या अर्दवायू उत्पादन कारखान्याची बुन्याद घालप हे त्या दिशेन एक व्हड पावल आसा असो उल्लेख तांणी केलो. आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहाँ के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है. उत्तर आंध्राच्या समृद्ध आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी 13,500 परस चड आदिवासी बायलांनी सादर केल्लें पारंपारीक थिम्सा नृत्यय तांणी पळयलें. उपरांत तांणी म्हत्वाच्या मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांचें राष्ट्रार्पण केलें, उक्तावण केलें आनी बुन्याद घाली. आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हैसूरात स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारकाचें उक्तावण केलें. 1892 वर्सा स्वामी विवेकानंदाच्या म्हैसूर भेटीच्या इतिहासीक घडणुकेचो उगडास ह्या स्मारकांत जाता. भारत आनी चीन आयज सिक्कीमांतल्या नाथुला खिंडींतल्यान सीमावर्ती वेपार परत सुरू करतले. ह्या दोन शेजारी देशांमदल्या एका म्हत्वाच्या व्यापारी मार्गाचें पुनरुज्जीवन जातलें. ह्या वेपाराक लागून 2020त कोविड-19 महामारीक लागून लादिल्ली 6 वर्सांची स्थगिती सोंपतली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज पुण्यांत आयोजीत एका कार्यावळींत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांकां लोकमान्य टिळक स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलो. आजचो दीस स्वातंत्र्य सैनीक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकाची पुण्यतिथी आनी समाज सुदारक लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हांची जयंती म्हणून मनयतात. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सर्तींत बायलांच्या 54 किलो वजनाच्या विभागात बॉक्सिंगांत पयलें भांगरा पदक जिखपा खातीर खेळगडे प्रिती पवाराक केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी परबीं दिल्या. भारतीय हवामान विभागान आयज पूर्व राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेग कर्नाटक, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोकण, गोवा, केरळ आनी माहेत घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावसाचो अंदाज दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.